Om Shanti. Donc aujourd'hui, Godada voit ses enfants rêves, valorisent les bien-aimés, principes, les parfaits. Vous êtes seuls, poignée d'âmes élevées sur des millions et des millions à recevoir l'amour et l'affection de Dieu. Papa voit les 3 trônes royaux de chaque enfant. Et c'est seulement à l'âge de confiance que vous recevez ces 3 trônes des enfants. Pouvez-vous voir les 3 trônes? L'un est le trône du front, sur lequel l'âme rayonne. Le second est celui du cœur de Dieu. Vous êtes assis sur le trône du cœur, n'est-ce pas? Le troisième est le trône du monde futur. Vous êtes devenus les plus fortunés de tous en vous asseyant sur le trône du cœur. Vous seuls, les enfants, fortunés, avez reçu le trône du cœur de Dieu. Vous recevrez bien le trône du royaume du monde dans le futur, mais qui a droit? Ceux qui deviennent des souverains de soi, des maîtres de soi en ce moment. Si vous n'exercez pas cette souveraineté sur vous-même, vous ne pouvez recevoir le royaume du monde. Parce que c'est en régnant sur vous-même en ce moment que vous accédez au royaume du monde. Les centres pour régner sur le monde sont créés en ce moment. Ainsi, chacun de vous fait-il toujours l'expérience d'être un souverain du soi? Vous connaissez la louange du royaume futur, n'est-ce pas? La seule religion, un seul royaume, la loi et l'ordre, un royaume de paix, de bonheur et de prospérité, et empli de prospérité. Vous rappelez-vous combien de fois vous avez régné sur vous-même et sur le monde? Vous rappelez-vous combien de fois vous avez régné sur vous-même et sur le monde? Vous rappelez-vous combien de fois vous avez régné? Vous en souvenez-vous clairement? Devez-vous faire un effort pour vous en souvenir? Hier vous régnerez demain. En êtes-vous aussi clairement conscient? Les âmes qui exercent constamment sur elles-mêmes une souveraineté constante en ce moment en seront clairement conscientes. Êtes-vous tous des souverains du soi? Êtes-vous tout le temps ou seulement de temps en temps? Que diriez-vous? Êtes-vous constamment souverain de vous-même? C'est le tour des doubles étrangers. Êtes-vous toujours souverain de vous-même? Les pandas, l'êtes-vous tout le temps? Baba demande si vous l'êtes tout le temps. Pourquoi? Si vous ne régnez pas constamment sur vous-même durant cette seule incarnation qui est une vie courte, comment pourrez-vous recevoir la souveraineté de soi constante pour 21 vies, pendant 21 vies? Souhaitez-vous régner sur le royaume pendant 21 vies ou seulement pour quelque temps? Que voulez-vous? Voulez-vous régner tout le temps, constamment, ou moins acquiescer? Matcha, vous voulez devenir des souverains pendant 21 vies.
Avoir droit au royaume veut dire être un souverain même dans la famille royale. Seuls quelques-uns Avoir droit au royaume veut dire être souverain même dans la famille royale. Seuls quelques-uns siègent sur le trône, mais là-bas, la famille royale reçoit autant de respect que ceux qui ont droit au trône. Mais ce monde est lié à l'époque présente. Notre compte est lié à l'époque présente. Si maintenant c'est seulement de temps en temps, là-bas aussi ce sera de temps en temps. Si maintenant c'est tout le temps, là-bas aussi ce sera tout le temps. Réclamer Abba Abdada, le droit complet signifie revendiquer un royaume, un droit pour le présent ainsi que pour le futur. Les 21 vies futures en entier. Ainsi, doubles étrangers réclameront-ils un droit total, la moitié ou seulement un petit peu? Que prendrez-vous? Vous voulez réclamer les droits entiers, complets, pas une seule vie en moi. तुम्ही रक्षक तुम्ही दिल के तुम्ही सहारे हो मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओम शांति शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो सत्यता की परख है संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच la vérité, les bonnes manières. La vérité se reconnaît les divinités qui se manifestent dans vos pensées, vos paroles, vos actions, vos relations et vos connexions. Si quelqu'un dit je dis toujours la vérité, mais que ses paroles et ses actes ne sont pas empreints de divinité, les autres n'auront pas le sentiment qu'il s'agit de la vérité. Par conséquent, imprégnez de divinité le pouvoir de la vérité. Peu importe ce que vous devez tolérer, n'ayez pas peur. Avec le temps, la vérité sera automatiquement avérée. ओम शांति सभी ठीक हैं बाबा की ज्ञान और शिक्षा हमको हर कदम La connaissance de Baba et les enseignements à chaque pas nous fait avancer. हमारी जो मंजिल है लक्ष्य है जीवन का उद्देश्य है उस तरफ बढ़ाती है et le but de notre vie, न केवल Baba nous fait atteindre. ज्ञान समझ है और अगर समझ से हमारा Nous comprenons la connaissance, nous en बोलना और parlons. कर्म हो Et तो दूसरे ensuite, को भी वो अनुभव होगा सिर्फ ऐसे नहीं कि nos ज्ञान actions सुना दिया ज्ञान बोल दिया पर अपनी समझ devraient permettre aux autres और अपनी d'expérimenter धारणा
Non seulement nous devrions partager les points, partager la connaissance, mais notre sagesse et ce partage d'expérience, tout comme Baba dit, à travers votre visage, votre attitude, Baba sera révélé. Et pour cela, nous avons besoin de compréhension, de la connaissance de Baba, mais aussi d'inculquer, de s'impliquer, de s'imprégner des vertus divines. Même si quelqu'un semble ne pas avoir de dharma, donc elle ne peut pas affecter ou du moins avoir une impression sur une autre personne. Si quelqu'un dit je dis la vérité, je suis une âme, tu es une âme, mais tout en disant cela, il peut y avoir de l'ego. Il peut ne pas y avoir ce sentiment de conscience. Et donc Baba dit, comment montrer la vérité? Pour Baba aussi, on dit Satyam Shivam Sundaram. Très belle chanson. C'est moi qui rajoute ça. बहुत बहुत न केवल याद लेकिन अपना भाग्य है हमारा कि हमारा परम शिक्षक स्वयं परमात्मा है और वह ज्ञान के सागर है। ज्ञान के सागर के द्वारा हम सभी मास्टर Baba prend soin de nous, c'est aussi notre fortune. तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अगर सत्यता है de connaissance, तो Baba nous dit दिव्यता की aujourd'hui, donc elle reprend अनुभूति d'ici. होगी। À travers cette reconnaissance de la divinité, बाबा कहते हैं soyez expérimentés dans vos pensées, paroles et actions, et vos relations, et vos connexions. और कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होगी। हम लोग साधारण नहीं, हमारी दृष्टि, हमारा बोलना, notre drishti, notre façon de parler, nos paroles, nos mots, tout. Si c'est ordinaire, les autres prendront beaucoup de temps avant d'avoir une foi. Mais si c'est dans nos paroles, nos actions, les autres vont facilement l'expérimenter. Donc, irradions cela qui est l'expérience de la divinité dans nos pensées, paroles et actions et nos relations et nos connexions. Quand quelqu'un dit « je dis toujours la vérité », mais n'a aucune divinité dans ses paroles et actions, les autres alors ne sentiront pas cette vérité comme étant la vérité. Par conséquent, imprégnez-vous de cette divinité avec le pouvoir de la vérité. Peu importe ce que vous devez tolérer, n'ayez aucune crainte. À travers cela, tout va être prouvé en accord avec le temps. कई बार कई ज्ञान लोग सुनते ही हैं, 1 साल तक 2 साल तक उनको जरूरी नहीं कि बुद्धि में समझ आता है। De nombreuses fois, beaucoup d'âmes écoutent la connaissance année après année. Mais il semble qu'il n'y ait pas de grande compréhension ni de foi. Et alors plus tard, parce qu'ils continuent de maintenir la vérité, quelquefois, certaines lignes reviennent et ils reviennent. Alors que le centre peut être très proche, ils savent que le centre est très proche, mais ils ne viennent pas. Mais alors le temps vient où ils réalisent et ils viennent simplement. कई अच्छे VIP भी आके कहते हैं हमारे पड़ोस में था
Même les VIP viennent et voient. हमने कभी ध्यान नहीं दिया था, Nous sommes tout proches du पर जब centre उनको समय et nous ne आता है voulions pas venir. तो ज्ञान Mais अच्छा alors les लगने लगता है। situations sont arrivées pour eux, le temps est venu तो pour eux. जैसे ही उनको ज्ञान अच्छा लगता है तो चलने लगते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं। Et alors ils viennent तो इसलिए et ils deviennent हमें des étudiants petit à अपना जो petit. हमारा Et सत्य donc pour है, nous, जिस पर मुझे विश्वास la है, vérité, je उसमें dois कभी avoir भी la foi dans la vérité, डाउट नहीं आना चाहिए। afin कई qu'il बार n'y ait ऐसा aucun होता है, doute. मुझे याद है जब हम ज्ञान में आए De nombreuses fois, तो ce qui se परिवार से passe, कुछ je और me भी souviens थे, de cela. फिर समाज के कारण, Quand je कुछ suis venue à परिवार के Baba, कारण सबने दूर हो गए कि हम नहीं जाएंगे। पर मेरे को तो था कि यही सत्य है। quelqu'un était dans चाहे une जीवन में famille ये नहीं था कि आगे क्या करना है, पर सत्य qui तो है। parlait à l'autre famille, et और donc petit à खासकर जो petit, दादियों की il y a दिव्यता eu थी, petit à petit, il y avait cette foi que cela est la vérité. बिल्कुल साधारण, उनके कपड़ों से Et Baba parle बिल्कुल aujourd'hui de la साधारण, divinité लेकिन de la स्वच्छ। vérité. चाहे उनके पास बहुत कुछ नहीं था, Nous तो भी semblons, रॉयल्टी थी, nous दिव्यता थी। semble, nous तो हमारे semble, पास enfin चार notre, पांच la façon dont nous sommes बहनें habillés, इकट्ठी etc., tout आती थी ça semble ordinaire, mais notre तो बिल्कुल visage, लगता था देवी अंदर आ रही है, देवी प्रवेश कर रही है। तो उसका जो प्रभाव है, et ils peuvent ressentir दिव्यता celles-là sont का, comme des déités qui सत्यता retournent dans जो leur maison दिव्यता में परिवर्तन हुई है, quand ils les voient à उसका प्रभाव, l'extérieur. चाहे आप ज्ञान Cette सुनो नहीं divinité, सुनो, अभी तो ज्ञान पता भी नहीं था, la vérité पर उनका प्रभाव, est reconnue comme étant la divinité. दिव्यता का प्रभाव। तो जैसे ही आप कहीं प्रवेश करो, किसी से बात करो, तो आपके बात करने में L'effet de la न केवल divinité, सभ्यता हो, votre manière पर de दिव्यता हो। parler, तो अब सभ्यता और दिव्यता दोनों शब्द याद non pas रखते vraiment हुए autant de manière, mais juste de la आज के divinité. दिन Donc हम souvenez-vous, la अटेंशन दे vérité करके et la divinité. अपने में देखेंगे Et porter une attention कि हमारे संकल्प, sur l'expérience de la divinité. पहले तो संकल्प दिव्य चाहिए, Contrôler nos साधारण pensées. नहीं चाहिए। बाबा En ने कहा premier, ce sont nos दफादारन pensées. की Nos pensées doivent être चाहिए। divines. Il n'y a aucune संकल्प peur à बोल avoir. कर्म Avoir de la foi संबंध संपर्क में dans les pensées, दिव्य। paroles et relations et connexions, qui est de la divinité. अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से ज्ञान के रतन Une dernière avec de और révision, donc les स्नेह joyaux de के perles, मोती emplis d'amour, les joyaux de la connaissance. Donc c'est la Vyakta Murli du 13 septembre 1975. La transformation du monde et la tâche spéciale de la vie brahmine. विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण Vous जीवन का expérimenterez alors शीर्ष vous-même कर्तव्य comme है। étant ceux qui voyaient et सब entendaient बातों toutes choses à में दूर distance. दूर À देखा distance. भी Vous और सुनने vous वाला resterez अपने comme को assoiffés अनुभव pour l'expérience de करेंगे। l'amour, de la coopération et du सदा pouvoir. स्नेह L'expansion de सहयोग nombreux और types de शक्ति désirs, के d'espoir et de souhait अनुभव constamment करने apparaîtra की en face de vous प्यासे comme des रहेंगे। épines. Mais à cause अनेक de प्रकार ces, की स्वयं de, के de प्रति tempêtes plutôt, इच्छाओं à cause de का ces tempêtes, la व destination de आशाओं l'acquisition का semblera très और loin. कामनाओं का Donc aujourd'hui, विस्तार Babdada a vu la scène de telle तूफान के transformation du समान monde, de tels आता ही transformateurs du monde. रहेगा। Dans le monde corporel, इस vous तूफान के garderez कारण constamment le fait प्रकृति de continuer d'écouter les सदा calamités दूर causées par l'eau. नजर आएगी। Tout en entendant आज ऐसे cela, विश्व expérimentez-vous du परिवर्तक plaisir ou de la बच्चों का दृश्य miséricorde? Ou y देखा। a-t-il aussi de la peur? Que साकार ressentez-vous? दुनिया में पानी का Ressentez-vous quelquefois तूफान आया हुआ comme है। étant effrayé et quelquefois उसका on se sent नजारा effrayé? सुनते रहते Ressentez-vous de la miséricorde ou expérimentez-vous du सुनते हुए plaisir? मजा Il ne आता devrait y है avoir aucune या peur. En ce रहम moment, आता है même alors, या la भय conscience भी que आता vous है। êtes क्या होता femme है, est fausse. Vous ne कभी devez pas भय considérer लगता comme étant seule. कभी Vous devriez रहम toujours आता है। maintenir la conscience de votre forme पांडवों combinée को d'une भय Shiv लगता Shakti है, avec le niveau de cette रहम forme आता है। combinée.
या मजा आता है, भय तो होना न चाहिए। मैं फीमेल अर्थात कमजोर बिना मेल Donc के avec le niveau de la forme combinée इस de समय Shiv यह Shakti, स्मृति भी रॉन्ग है, अपने को अकेला un autre कभी truc नहीं par rapport à vous, समझना चाहिए। vous ne devez pas, अपने vous कंबाइंड n'êtes pas simplement पुरुष une शक्ति Shakti, के mais une रूप की Shiv स्मृति Shakti. में रहना Quand चाहिए। quelqu'un voit les deux ensemble, सिर्फ il est शक्ति भी hésitant dans le नहीं, fait शिव à attaquer. शक्ति। De la même manière, la forme कंबाइंड combinée vous रूप की influencera la स्थिति nature, से la personne à ce moment-là, c'est-à-dire जैसे qu'ils स्थूल में hésiteront दो à vous दैत्य vous attaquer हुए d'une वार manière ou d'une करने autre. के लिए Non seulement une संकोच personne, mais होता même les है, éléments de la nature hésiteront, वैसे c'est-à-dire même les ही éléments du monde. कंबाइंड स्थिति Même les का éléments ne seront pas प्रभाव capables de vous attaquer. उस Vous समय serez के protégé quand vous प्रकृति avez, और व्यक्ति के ऊपर quand पड़ेगी, vous serez protégé même quand vous serez même अर्थात un किसी pas भी éloigné. प्रकार के वार Bien करने में ils auront des संकोच armes, होगा। bien qu'ils auront le pouvoir de leur arme, ils deviendront न faibles. सिर्फ व्यक्ति Cependant, à ce लेकिन moment-là, vous devez प्रकृति utiliser le का pouvoir de la तत्व भी transformation avec la conscience que संकोच vous n'êtes pas करेगा, seul, que vous n'êtes pas une femme et que vous êtes une अर्थात Shiv वह Shakti भी dans la वार forme नहीं combinée. कर Vous avez सकेंगे। besoin du pouvoir de la transformation pour एक cela, कदम n'est-ce की pas? दूरी पर Êtes-vous भी capable de transformer la personne et la सेफ nature हो avec votre जाएंगे, conscience puissante et votre attitude? शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे। लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज करो कि मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को परिवर्तन कर ले। अब तो À यहाँ présent, il y दूसरी a तीसरी simplement les चौथी examens d'une seconde या दूसरी ou de la तीसरी क्लास troisième के ou de la पेपर्स seconde ou हैं। troisième classe. फाइनल अंतिम पेपर की La forme des रूपरेखा examens तो finaux इससे कई गुना भयानक रूप की होंगी। sera फिर encore क्या plus करेंगे? effrayant que cela. कईयों का Que ferez-vous संकोच alors? बढ़ता है, कौन Beaucoup सा? d'entre vous ont de telles pensées. Au कई sujet de quoi? स्नेह Beaucoup और disent बचत avec beaucoup में d'amour et un कहते droit. हैं कि इस Appelle-moi avant cette दृश्य के scène पहले ही afin que je हमको बुला puisse voir लो, toutes ces, हम भी cela वापस depuis से la forme de देखेंगे। la région subtile. लेकिन शक्ति Cependant, स्वरूप का le rôle pratique d'être une प्रैक्टिकल incarnation de पार्ट व pouvoir, la forme शक्ति अवतार Shakti, की le rôle de la révélation प्रत्यक्षता का d'incarnation पार्ट de Shakti स्वयं et le द्वारा rôle de révéler le Père à सर्वशक्तिवान बाप l'autorité को toute-puissante à travers vous-même प्रत्यक्ष doit करने avoir का lieu dans पार्ट certaines circonstances. ऐसी ही Par conséquent, afin परिस्थिति में d'être होना capable de voir de है। telles scènes et इसलिए ऐसे d'entendre les नजारे को tambours अकाले मृत्यु de के la mort finale, नगाड़ों को augmenter le देखने pouvoir de la transformation en vous. और सुनने के लिए Amener une telle परिवर्तन transformation en की une शक्ति seconde. को Parce que बढ़ाओ। le jeu entier est basé sur une एक seule सेकंड में seconde परिवर्तन à करो, suivre. क्योंकि खेल ही एक सेकंड के आधार पर है। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति।